Today's topic of discussion would be derivatives on infinite series. So let's begin. Y equals to root over of x divided dx equals to 1 by 2i minus 1. So see, देखो इधर जो ये वाला आउटसाइड में है, इनसाइड में सेम ही है. रूट एक्स प्लस इधर भी एक रूट एक्स होगा, तो ऐसे चलता जाएगा. मतलब क्या, इसके मतलब ये है बाहर में जो है अंदर में वही है, रिपीटेड. सो वी कैन कंसीडर इट लाइक दिस, रूट एक्स प्लस सेम चीज है, रिपीट कर रहा है. बाहर में जो है इनसाइड में भी सेम, डुप्लीकेट as y. We can replace it as y. Now squaring both sides, y square equals to x plus y. क्योंकि रूट है उसको स्क्वायर करना पड़ेगा रूट को हटाने के लिए. अब नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई. नाउ डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है? 2i, और उसका अंदर का डेरिवेटिव dy dx, इसका 1 और इसका dy dx. ठीक है. अब ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो 2i dy dx माइनस dy dx इक्वल्स टू 1. नाउ टेक dy dx कॉमन, 2i minus 1 equal to 1, dy dx is equals to 1 by 2i minus 1. So this would be our first answer. Now moving into the second sum, y equals to y log x plus root over of log x plus root over of log x. Now same thing will get repeated. So we can now replace, as we have as there is the same repetition outside and inside, same repetition outside and inside. So previous sum में हम क्या किया था, इसको y से रिप्लेस कर दिया था. इधर भी वही करेंगे. अच्छा, इधर RTP क्या पूछा है? RTP क्या पूछा है? 2y minus 1 dy dx minus 1 dy dx is equals to 1 by x. तो इधर हम क्या लिखेंगे? रूट ऑफ log x प्लस वाई. सेम चीज. Now squaring both sides. Why do we do squaring both sides? To eliminate the root. रूट के एलिमिनेट करने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेता है. log x प्लस वाई. देखो अंदर में जो है, बाहर में वही, ভেতরে যা আছে বাইরেও সেম জিনিস আছে. এখানেও তাই ছিল, ভেতরে যা আছে বাইরেও সেম জিনিস আছে. ওই জন্য কি দিয়ে রিপ্লেস করে দিয়েছি? y দিয়ে. এখানেও দেখো বাইরে ভেতরে যা আছে বাইরে সেম জিনিস আছে, ওই জন্য আমি y দিয়ে রিপ্লেস করে দিলাম. স্কোয়ারিং প্রসেস করে দিতে y স্কয়ার ইকুয়াল টু log x प्लस y. तो नाउ सेम थिंग, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2i dy dx. सेम थिंग, 2i dy dx. log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x और y का डेरिवेटिव dy dx. सेम चीज. नाउ 2i dy dx, see the analogy, there is no difference from this sum and previous sum. Now take dy dx common, 2i minus 1 1 by x. Proved. Same चीज. Please pause the video to write it down. How to solve these type of problems? Y equal to sin x to the power of, same चीज repeated, y. Taking log both sides, log y equal to log of sin x to the power of y. तो y log of sin x
equal to log y. Now, differentiating both sides with respect to x, ddx of log y equals to ddx of y into log sin x. Y is an algebraic function, the log sin x is logarithmic function. So uv algebraic function, logarithmic function, uv, and there is an into in between. So now how to do? Y bar product rule, applying product rule, log sin x plus log sin x bar divide dx. ddx और log y क्या होता है? पहले 1 by y फिर divide dx. Now how to do? 1 by y divide dx y into ddx of log sin x क्या होता है? 1 by sin x. ddx of log x 1 by x, ddx of log sin x 1 by sin x. ddx of log sin x 1 by sin x. Now next ddx of sin x cos x plus log sin x divide dx. Now 1 by y divide dx y cot x plus log sin x divide dx. Then see ddx of log sin x क्या आता है? ddx of log sin x 1 by sin x है ना, ddx of sin x cos x डेवलप करें. chain rule ddx of log sin x 1 by sin x, ddx of sin x by applying chain rule cos x. Now cos x by sin x cot x, cos x by sin x cot x. Now 1 by y divide dx minus log sin x divide dx. So y cot x. Now let's divide dx in one sides. Taking divide dx common, 1 by y minus log sin x is equals to y cot x. Now take y as LCM, 1 minus y log sin x, y cot x. Y as LCM 1 minus y log sin x. Now divide dx, multiply y with this, so y square cot x, 1 minus y log sin x. See what we have done. First, same cheese is getting repeated in the power, same thing. So we replace these things as y. Now we know if there is a power in the power, if there is a variable, we can take log both sides. In the power, if there is a variable, we can take log both sides. Now log of x to the power of n is equals to n log x. देखो ওই ফর্মুলাটাই আমরা লাগিয়েছি, log of x to the power of n log x, তো ওইটা সামনে চলে আসছে. এরপর যদি আমরা both side ডেরিভেটিভ নিই তাহলে আমরা এখানে একটা প্রোডাক্ট রুল পাচ্ছি, কারণ এটা একটা ভেরিয়েবল, কারণ এটা একটা ভেরিয়েবল, এটা একটা ভেরিয়েবল, দুটো ভেরিয়েবল, এটা একটা ভেরিয়েবল, এটা একটা ভেরিয়েবল, সেই জন্য আমরা প্রোডাক্ট রুল পাচ্ছি, আর মাঝখানে ইনটু আছে, ওই জন্য আমরা প্রোডাক্ট রুল পাচ্ছি. প্রোডাক্ট রুল কি বলে? y কে বাইরে করব, ডেরিভেটিভ log sin x করব, আবার log sin x কে বাইরে করব, ddx of y করব. একে চাপবো এ ডেরিভেটিভ করব, আবার একে চাপবো এ ডেরিভেটিভ করব, তাই করেছি. আর ddx of log y কি হয়? 1 by y ডিভাইড dx, হয়ে গেল 1 by y ডিভাইড dx. এবার কি করব? এবারে সব আমাদের ডেরিভেটিভ হয়ে গেছে, আর না হয়নি এখন, সরি. ddx of log sin x কি হয়? প্রথমে ddx of log sin x 1 by sin x ডেভেলপ করে, তো ddx of sin x কি হয়? cos x by applying chain rule. এবার cos x by sin x কি হয়? cot x. এর কোনো ডেরিভেটিভ নেই, এবার জাস্ট সিম্পলিফাই, জাস্ট ডিভাইড dx টা বার করতে হবে.
1 বাই dy dx আছে আর এখানে dy dx আছে, এদিকে নিয়ে আসলাম 1 বাই y মাইনাস log sin x হয়ে গেল, y LCM হয়ে গেল। Now do cross multiply and now just do cross multiply y into y cot x, y square cot x and 1 minus y log sin x. Pause the video to write it down. This sum is very important. Now how to solve? Because same thing is getting repeated. A to the power of x infinity. Same thing is getting repeated. So now how to solve? Y equals to a to the power of x to the power of y. Now here we have three options. a to the power of x to the power of y को हम लोग ऐसे लिख सकता है, which one to choose? Which one to choose? ठीक है, एक बात देखो, इधर दो लॉग है, दिस थिंग कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज। किसको चूज करेंगे? अभी इसको ऐसे ही रख लेंगे। एक बात देखो, इधर दो बार लॉग है तो हमको ऐसा करना पड़ेगा, हमको भी दो बार লগ लेना पड़ेगा। আমাদের এখানে দুটো লগ আছে প্রুফের মধ্যে, তো আমাকে এমন ভাবে অঙ্কটাকে ফর্মুলেট করতে হবে যাতে আমাদেরও দুবার লগ আসে। वन थिंग टू नोट, रफ वर्क में जाओ, y log x, what does it mean? What does it mean? Means log x to the power of y. Now you people will say how? Log of x to the power of n log x, that formula. Log of x to the power of n log x. So y log x is equals to log x to the power of y. So we will have to write in such a way that log of x to the power of y arrives, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ में y log x है और y अगर इस तरफ चला जाएगा बाय मींस ऑफ दिस फॉर्मूला, मतलब हम लोगों को ये वाला पार्ट log ऑफ दिस पार्ट लेना पड़ेगा, तब भी हम लोग y log x जनरेट कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस। हाउ टू डिलीवर? देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, y is equals to a to the power of x to the power of y, सॉरी ऐसा था, a to the power of x to the power of y. Now taking log both sides, taking log both sides, देखो कैसे भी तरह हम लोगों को दो बार लॉग तो लेना ही पड़ेगा, যে কেউ হোক আমাকে দুবার লগ নিতেই হবে, কারণ আমাদের কোশ্চেন দুবার লগ আছে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কোশ্চেনে বলে দিয়েছে y log x, তো আমাকে log of x to the power of y জেনারেট করতেই হবে। সেটা কি করে করা যায়? টেকিং লগ বোথ সাইডস নাও, x to the power of y log a হলো, তাহলে আমাদের এটা x to the power of y চলে আসলো। কিন্তু প্রুফে বলা আছে y log x, তাহলে আমাকে x to the power of y এর আগে যদি লগ বসাতে পারি তাহলে আমার y log x চলে আসবে, আর আমাকে দুবার লগ এমনি নিতে হবে কারণ প্রুফের মধ্যে দুবার লগ আছে, আরেকবার লগ দেবো। এবার দেখো taking log both sides, same cheese, taking log both sides. Now log m into n, log of m into n, log m plus log n, log of m into n, log of m into n, log m plus log m. Now how to write? Log of x to the power of y plus log of log a, log mn is equals to log m plus log n,
नाउ हम लोगों का जो प्रूफ में था वो आ गया, देखो। नाउ वी कैन राइट इट एज वाई लॉग एक्स प्लस लॉग ए, तो log y. Now how to solve? Taking derivative both sides. ddx of log y, ddx of y log x, ddx of log, एक सेकेंड, log n, हाँ, log a. Now how to do? Derivative of log y, 1 by log y. इसका डेरिवेटिव पहले 1 by log y, এই ডেরিভেটিভ তুমি 1 by log y হবে, তো ddx of log y, এই ডেরিভেটিভ তুমি 1 by log y হবে, তো ddx of log y. এবার uv প্রোডাক্ট y বাইরে, ddx of log x বাইরে, ddx of y. वन बाई log y, ddx of log y क्या होता है? 1 by y dy dx. ठीक है? Now y into ddx of log x, 1 by x plus log x dy dx. Now 1 by y log y, we are coming to the end of the sum. All the derivative has been done. मैं क्या कर रहा हूँ, सारे log y को, सारे dy dx को एक जगह कर रहा हूँ, y by x. Now taking dy dx common, taking the dy dx common, what will be the result? 1 by y log y minus log x is equals to I by x. dy dx y log y, this thing will get cancelled out. This thing will get cancelled out. We will get 1 minus y log x, y by x. Now we will apply cross multiply. This thing will get cross multiply like this. dy dx is equals to y square log y. Cross multiply has occurred. Y square log y. X into 1 minus y log y log x. See, same thing has occurred. We can write also like this, because log y into log x can be written as log x log y, as a into b is equals to b into a. So x into 1 minus y log x log y square log y. So pause the video to write it down. This is very important for your boards and also for your GE. Very important, sir. Same sum, type of sum. Same thing is getting repeated like this. Now we will replace e to the power of x plus y, because same thing is getting repeated like this. Taking log both sides, log y log e x plus y
x plus y log e log y is equals to x plus y. टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स. देखो फॉर्मूला क्या होता है, log of x to the power of n log x. वही फॉर्मूला टेकिंग लॉग बोथ साइड्स. तो ये सामने आ जाएगा. अब log e का वैल्यू क्या होता है 1, इसलिए 1 कर दिया. नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स 1 by y dy dx 1 plus dy dx. Now dy dx would come in this side. 1 by y minus dy dx is equals to 1. dy dx can be taken as LCM. 1 by y minus 1 is equals to 1. Now dy dx is equals to y LCM. 1 minus y is equals to 1. So dy dx is equals to y into 1 minus y. Proved. Same thing, only the first part will get changed. Replace this as y. both side log নিয়ে নাও, এটা সামনে চলে আসবে ফর্মুলার দ্বারা. log এর ভ্যালু 1 পুট করে দাও. এর ডেরিভেটিভ করো 1 by y dy dx, এর ডেরিভেটিভ করো 1, এর ডেরিভেটিভ করো dy dx. dy dx की साइड নিয়ে नाओ, dy dx कॉमन নিয়ে नाओ. 1 by y minus 1, y to LCM নিয়ে नाओ 1 minus y. Now to cross multiply. Please pause the video to write it down. Pause the video. Y equals to root x to the power of root x to the power of root x to the power of root x, and now it will continue. Prove that dy dx is equals to y squared by x into 2 minus y log x. Now y equals to x to the power of y, because same thing is getting repeated. This thing is same as y. Now x to the power of half to the power of y. root x मतलब x to the power of half. root x माने x to the power of half. एरपॉर according to the formula of indices, power to the power of power would get multiplied. So x to the power of y by 2. Half into y is equals to y by 2. Now any variable to the power of variable, taking log both sides. Let's see the proof. Yes. But variable to the power of variable, taking log both sides. Taking log both sides. Log y is equals to log x to the power of y by 2. Formula y by 2 will come forward. Log x log y. Now differentiating both sides with respect to x. 1 by y dy dx ddx of y log x. y is algebraic function, log x is logarithmic function, बीच में into है, तो we will apply product rule. algebraic function to logarithmic function, बीच में into है, applying product rule. y bar ddx of log x 1 by x log x bar ddx of y. y বাইরে ddx of log x 1 by x log x বাইরে ddx of y. 1 by y dy dx half y by x plus y into 1 y or by x log x dy dx. Now to cross multiply 2 by y dy dx cross multiply.
minus log x plus, so if plus come from RHS it would becoming minus in LHS, प्लस अगर RHS में है तो अगर LHS में आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, প্লাস যদি RHS থাকে সেটা যদি LHS আসে সেটা তখন মাইনাস হয়ে যাবে y/x। আর এই দুটো কোথায় গেল, ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি, তারপর এটাকে এদিকে এনেছি, ডিভাইড বেসিক্যালি একসঙ্গে করছি। কি করছি মানে এরকম করে এটাকে এদিকে এনে আমার লাভটা কি হলো, ডিভাইড ডিএক্স গুলো একসঙ্গে হয়ে গেল, ডিভাইড ডিএক্স 2/y minus log x is equals to y/x, divide dx, y LCM 2 minus y log x, y/x. Now we will cross multiply, divide dx is equals to y square, y into y square 2 minus y log x, and it would get cross multiply also, y square into x, same thing, this will cross multiply here and y would get cross multiply over there, so y into y square, ये वाला पार्ट into ये वाला पार्ट, ठीक है, प्रूव हो गया। Pause the video to write it down. So by doing this sum we are coming to the end of infinite series. Infinite series एक छोटा चैप्टर है, খুবই ছোট চ্যাপ্টার, একটা চ্যাপ্টার, এটা এক্সারসাইজ ডিফারেন্সিয়েশনের, এরপর আমরা করব হচ্ছে প্যারামেট্রিক ফর্ম, ঠিক আছে, দয়া করে ভিডিওটাকে দেখে নাও, নেক্সট ভিডিওতে আমরা প্যারামেট্রিক ফর্মে যাব।